Welcome back to our lecture series of complex analysis. In this lecture, we will study Cauchy-Riemann equations and then we will deal with some examples. See, in the complex analysis, we always concern about analytic function और एक function analytic कब होगा जब वो differentiable हो. Now to determine the differentiability, we have some concept and same time we can use the Cauchy-Riemann equations. Cauchy-Riemann equations को यूज करके we can determine कि कौन से पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एंड विद दिस सम एक्स्ट्रा कंडीशंस Cauchy-Riemann इक्वेशन को ही यूज करके हम वो पॉइंट्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एंड जैसे ही हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी आएगी वी कैन determine the analyticity of a function. So, Cauchy-Riemann equations play a significant role to determine the differentiability and hence to determine the analyticity of a function. Right? अब हम Cauchy-Riemann इक्वेशन का सबसे पहले डेरिवेशन करेंगे और उस डेरिवेशन के लिए वी रिक्वायर्ड सम सपोजिशन. सो आई विल राइट दो सपोजिशन फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस द कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द derivation. Derivation of CR equations. CR means Cauchy-Riemann. Okay, so for this we required some supposition. Supposition says हम जब भी Cauchy-Riemann इक्वेशन की बात करेंगे वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर होगा. इसका मतलब जब भी हमें ये कहा जा रहा है कि Cauchy-Riemann इक्वेशन आर सेटिस्फाइड विदाउट स्पेसिफाइंग एनी पॉइंट, दैट मीन्स Cauchy-Riemann इक्वेशन और फंक्शन के डोमेन के हर एक पॉइंट पर सेटिस्फाइड हो रही है. अदरवाइज हमें हमेशा स्पेसिफाइड करना है कि Cauchy-Riemann इक्वेशन कौन से पॉइंट पर सेटिस्फाइड है. ठीक है, सो इस कंसेप्ट को डील करने के लिए आई एम राइटिंग दिस सपोजिशन दैट लेट f of z is equals to u plus iota v, that is also same as u x comma y plus iota v x comma y, where you can see this z as x plus iota y and same time x comma y. Okay, so we have this supposition first, then second is that z is equals to x plus iota y and the change in z is measured by del x plus iota del y. Okay, now we are considering that f prime z naught, that is the derivative of this function at z naught is exist. Okay, where this z naught is equals to x naught plus iota y naught. Okay, then we are supposing that some function w can be represented by w equals to f of z, and we are giving that the difference in w is the difference between these 2 points, that is z naught plus del z minus f of z naught. Okay, suppose this is our equation number 1, this is our equation number 2, or you can say supposition 2, this is our equation number 3, this is our equation number 4. Now if you use equation number 1 into 4, then we have the difference of del w in form of u and v. Okay, so I can write that using 1 into 4 we have that the difference del w is equals to, now when we have z, that is x comma y, we are writing u x comma y. Now you can see z naught plus del z, you can see we can write this as z naught plus del z is equals to x naught plus iota y naught plus del x plus iota del y, and that is equals to x naught plus del x plus iota y naught plus del y. So f of
this function, that means this have this real part and this imaginary part. So we can write this as f of this one, then f of this function. And if we are having this as real and this is imaginary part, then we can write this as u x naught plus del x comma y naught plus del y. So this is the u function, and likewise we can write plus iota v x naught plus del x y naught plus del y, राइट. सो इस तरीके से हमेशा हम फंक्शन को रियल और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई कर कर फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख सकते हैं. ओके, सो इफ वी यूज दिस डिस्कशन, देन वी कैन राइट दिस इक्वेशन नंबर 4 in the form of equation number 1, as you can see this will be f u of x naught plus del x comma y naught plus del y, right? Then we have plus iota v x naught plus del x comma y naught plus del y. And same time, if we use the same expression for fz naught, then you can write minus u x naught comma y naught plus iota v x naught comma y naught, right? Now you can write this as u x naught plus del x comma y naught plus del y plus this is real part, and from this I am taking the real part. Okay, so if we here we have minus this minus u x naught comma y naught, right? Then plus v x naught plus del x comma y naught plus del y minus v x naught comma y naught. Okay, so this is the imaginary part and this is our real part, and that is equals to del w. Now since we can divide it by del z, and here we are considering the complex representation, और यहाँ पर हम real representation consider कर रहे हैं variables का. I can divide by del x plus iota del y in place of del z, right? So you can write this as, we can write this as del x plus iota del y, and here also we have del x plus iota del y. Okay, now let me call this as expression number or equation number 5. ठीक है, now you can see it is important to keep in the mind that this equation number 5 remains valid when del x comma del y tends to 0 in any manner. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? Since you can see limit del z tends to 0, del w over del z, that is equals to dw over del z exists at z naught. So what we can say, therefore equation 5 remains valid as del x comma del y tends to 0 comma 0 in any manner that we may choose. Okay, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम डेल जेड को 0 की तरफ ले जाए चाहे किसी भी पाथ को यूज़ कर कर, तो हमेशा ही ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हमारी सपोजिशन में ही हमने कहा है that this derivative is exist. Okay, this derivative is nothing but the f z naught. Okay, that is f dash z naught exist. ये हमने लिया हुआ ही है सपोजिशन में, राइट? अब अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम किसी भी पाथ के अलोंग 0 0 पर अप्रोच करें, दिस डिफरेंस को 0 0 पर अप्रोच कराएं, तो हमेशा लिमिट सेम ही आएगी.
ठीक है. So we are supposing two approaches. So first we are taking the horizontal approach. That means हम डेल एक्स कोमा डेल वाई को जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, डेल एक्स कोमा डेल वाई को हम जीरो जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं विद अलोंग एनी लाइन दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. और जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को जैसे लेट मी राइट कि मान लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है अगर हम उससे अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब दिस इज द हॉरिजॉन्टल अप्रोच. एंड वेन एवर वी आर कंसिडरिंग द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, then this is the vertical approach. Okay, so we are going to take two approaches and then we will determine the partial order derivatives. So first is that horizontal approach. It says कि in particular if we approach along any line parallel to x axis, then there is no change in y coordinates, right? जब हम हॉरिजॉन्टल लेफ्ट या राइट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स में तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है. अगर y में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब दैट इज वी हैव दैट दिस डेल y, दैट इज दिस डेल y इज इक्वल टू 0 क्योंकि चेंज है ही नहीं. एंड we can measure that this del x comma 0 now tends to comma 0 horizontally. Okay, so or you can say this del x now becomes the del x plus iota 0 y. So iota del y, तो del y की वैल्यू तो 0 है, so we will have del z is equal to 0, right? So we have these three conclusion if we suppose the horizontal approach. ठीक है. Then from equation 5 we have that limit that is f prime z naught, that is equals to limit z del z tends to 0 del w over del z, and we know this expression, so that is equals to limit del x tends to 0, क्योंकि del y तो 0 है ही, तो del x का 0 होना मतलब this del x का del z का 0 होना means del x का 0 होना. Now I am just writing the expression for del w over del z. ठीक है, so you can see we can write this as limit del x tends to 0 and we have u x naught plus del x comma y naught plus del y, and that del y is 0, so we have u x naught comma y naught and then over del x. Okay, and then plus limit del x tends to 0 and we have iota del x tends to 0 and then v x naught plus del x comma y naught minus v x naught comma y naught, right, over this del x. Now look at these expressions in the brackets. So you can see यहाँ पर x naught में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, दैट इज del x, और यहाँ पर y फिक्स्ड है. इसका मतलब जो ये ऊपर वाला डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द वेरिएबल x while this y naught is constant. तो अब हमने देखा है कि जब कोई भी फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल डिपेंड कर रहा है और किसी एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है और रिमेनिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट है, तो वहाँ पर कंसेप्ट आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का. और ये जो चेंज है दैट इज ड्यू टू द एक्स ओनली. सो वी आर डिटरमाइनिंग, सी दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन एक्स
and rate of change in u due to x with respect to the change in x. इसका मतलब ये x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है. Similarly, this bracket also represents the partial derivative of v with respect to u. So if this limit tends to 0, then we are sure that this represents the u partial derivative del u by del x, that is curly u by curly x at x naught comma y naught. Okay, and plus we have iota curly over curly x of v at x naught comma y naught. Okay, so this is how you can achieve this the expression for this differentiation. Okay, so or which implies that we can write this as f prime z naught is equals to ux comma ux x naught comma y naught plus vx x naught comma y naught. Okay, this is our expression number 6, right? Now same time we can use the vertical approach also. This is the vertical approach. वर्टिकल अप्रोच में हम कोई भी ऐसी लाइन दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस उसके अलोंग अप्रोच करेंगे. ओके, सो इफ वी अप्रोच along a line parallel to y axis, then there is no change in x, so we can write then this delta x equal to 0, and this del z can be measured by iota del y, and now this 0 time del y tends to 0. ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन था दैट्स इन. नाउ यू कैन सी यहाँ पर 0 कांस्टेंट है और ये डेल्टा y नाउ टेंडिंग टू 0. ओके, सो यू कैन सी देन so we have that f prime z naught that is equals to limit del z tends to 0 del w over del z, right? And now if we use the expression number 5, then this limit can be determined as, now this del z tends to 0 will be iota del z tends to 0, and iota is constant, so we can say del y tends to 0. And in place of del w over del z, if we use the equation number 5, then we can write this as equation u of x naught comma y naught plus del y minus u x naught comma y naught over iota del y, right? In place of del z, now we are having only iota del y plus iota limit. Now we need to identify the imaginary part, so del y tends to 0, and here we have v x naught comma y naught plus del y minus v x naught comma y naught over iota del y, right? Now see in the brackets, so we have change in the u function due to the change in the variable y. यहाँ पर y है y नॉट प्लस डेल y और यहाँ पर है y नॉट ओनली. तो यहाँ पर y नॉट में डेल y का चेंज आया है, बट स्टिल द x नॉट इज सेम, दैट मीन्स x नॉट इज फिक्स्ड, or you can say x naught behaves like a constant. And same thing can be given for this function v also. So you can say this u and v functions are changing with due to the change in y variable while the x variable is constant. And again this is some sense of partial derivatives. Now ये change y variable के corresponding हो रहा है, and that is with respect to the change in y. So we have change in u due to the variable y with respect to change in y. So this represents the partial derivative of u with respect to y, and same time this represents the partial derivative of v with respect to the variable y. So which implies that f prime
z naught is equal to, now this will be the partial derivative of u, so you can write this as u with respect to y, so u y x naught comma y naught, and then we have 1 over iota here, then plus this iota will be cancelled out with this iota, and this is the partial derivative of v, so we have v y x naught comma y naught. Now if you further simplify, then we can write this as f prime z naught is equals to, now if you multiply by iota and minus iota, then we will have minus 1 at the denominator and iota as numerator, so you can write this as v y x naught comma y naught minus iota u y x naught comma y naught. Okay, so suppose this is our expression number 7, and here we have the expression number 6 with the iota now. Okay, now if we say that f prime z naught exist, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब ये हमेशा यूनिक ही रहेगा, सिंस f prime z naught is exist, that is it is unique, right? So therefore equation 6 and 7 must be same, that is we must have that expression 6 was u x x naught comma y naught and plus iota v x x naught comma y naught, and that is equals to v y x naught comma y naught minus iota u y x naught comma y naught, right? Now in the complex number system इस तरीके के एक्सप्रेशन तब ही इक्वल हो सकता है जब उनके रेस्पेक्टिव रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम हो, ठीक है? सो दिस इम्प्लाइज दैट u x comma x naught comma y naught must be equal to the real number, that is v y x naught comma y naught, and we must have that v x x naught comma y naught must be equals to minus u y x naught comma y naught, and these equations which are satisfied these x component and the y component, these equations are known as the Cauchy-Riemann equation at z naught. Okay, now suppose this is 8. Okay, so the equations in 8 are known as CR, that is Cauchy-Riemann equations 8 z naught. Okay, in general we write ux equal to vy and vx equal to minus uy. So this is the general form of Cauchy-Riemann equations, जहाँ पर हमें पॉइंट को अगर हमें स्पेसिफाइड है तब हमेशा हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है?